Okay. Morning, everyone. Morning, all. Okay, just waiting for a few others to join this session. Morning, everyone. Okay, how are you all doing? Doing good? Okay. So yesterday, because of some personal tragedy, I could not be able to take you a lecture. So apologies for that. Okay. As far as consistency and regulatory is concerned, so I am almost 97 to 96% consistent with the lecture schedule. कभी कभी एक दो बार ऐसे हो जाता है कि आई नीड टू कैंसिल बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस सो आई होप कि आप उसे माइंड नहीं करेंगे ठीक है एंड डोंट वरी लाइक सिलेबस कवरेज एंड एवरीथिंग दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी वो तो हम पूरा कर ही लेंगे ओके या सो हाउ आर यू ऑल डूइंग गुड एवरीवन ओके गोइंग ऑल गुड सो आई डिड सी योर असाइनमेंट्स जिन जिन लोगों ने मुझे भेजे हैं ओके प्लीज ऐसा मत समझिएगा कि इफ आई एम नॉट रिवर्टिंग यू बैक इसका मतलब मैंने आपके असाइनमेंट्स देखे नहीं है ऐसा बिल्कुल मत समझना because see I get assignments from roughly 100 to 150 kids every day on Telegram so हर एक को reply करना it's not my basically my strength because like you can very well understand I have some other schedules and in that so please don't feel that if you are submitting me I'm not seeing it okay ऐसा बिल्कुल मत समझना I know how and every one of you proceeds and I have a very idiocentric memory okay idiocentric in the sense कि मैं आपके हैंडराइटिंग ध्यान रखता हूँ ओके कौन कैसे लिख रहा है क्या लिख रहा है वंस यू स्टार्ट सबमिटिंग में सिनॉप्सिस ऑफ द डेली क्लास तो आपको ध्यान में आ जाएगा मैं क्या चीज बोल रहा हूँ सो आई एम वेरी बैड एट रिमेनिंग आई एम वेरी बैड एट बेसिकली not remembering according to the name but remembering according to the handwriting okay तो मैं handwriting से ही लोगों का basically analysis कर लेता हूँ कैसा है because I have also done a course on character reading body language and basically learning people's through their handwriting तो इसका भी course मैंने कर रखा है so I'm very basically able in that so थोड़ा सा वो चीज आप ध्यान में रखिएगा and please make sure that you keep on submitting me assignments जब जब मैं आपको दे रहा हूँ ओके इसका फायदा आपको थोड़े दिनों बाद होगा when we'll start off with climatology and when I will ask you to do the synopsis of daily class okay so I guess everyone is here so final audio and video check सबको मेरी आवाज आ रही है properly please comment is everybody able to hear and see me properly okay if I'm writing something on the board is it visible to all okay clearly visible okay morning all okay so before moving ahead one major announcement for all of you okay so एक बहुत बड़ी announcement है आप सबके लिए so there is an optional group of study IQ on Telegram it is called as geography optional okay study IQ it is called as geography optional study IQ okay so everyone please join this group okay बेसिकली ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑन दिस ग्रुप एवरी डे आई एम सबमिटिंग हिंदू आर्टिकल्स ओके जो हिंदू का न्यूज़पेपर का कवरेज है सो एवरी डे आई पोस्ट अप द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑन दिस ग्रुप एंड वो जो आर्टिकल्स रहते हैं वो आर्टिकल्स मार्क्ड रहते हैं वो आर्टिकल्स बेसिकली उनमें लिखा होता है कि आपको कैसे कैसे समराइज करना है क्या क्या करना है सो यू कैन जस्ट refer to this group for one stop analysis of the Hindu and this I do specifically for optional kids okay for the optional aspirants जैसे मैंने आपको promise दिया है so वो promise मैं fulfill करता हूँ and every day I do the same thing with regards to Hindu okay so everyone please join this group okay and please make sure कि आप लोग इसके articles regularly follow करते हैं okay I am giving my how much guarantee I am giving my 2000% गारंटी 100 नहीं 200 नहीं 2000% की गारंटी दे रहा हूं हाउ मच गारंटी आई एम गिविंग 2000% गारंटी द हिंदू एनालिसिस विच आई डू ओके जो मैं आपके लिए खास सवेरे उठ के करता हूं ओके 2000% गारंटी की इसमें से कम
कम से कम you will have 150 marks in your optional, okay, and approximately 300 marks in your GS. Okay, that's my basically commitment to you. Okay, कि 2000% की गारंटी है कि 150 मार्क्स का ऑप्शनल में आएगा आपके ऑप्शनल के पेपर में, एंड यू विल हैव 300 मार्क्स इन योर जीएस. एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस? ओके, सो एवरीवन प्लीज स्टार्ट दी फॉलोइंग दिस ग्रुप, एंड इसे ज्वाइन करने के लिए आप आपके मेंटर्स को, आप आपके मैनेजमेंट को तुरंत कंसल्ट कीजिए. दे विल गिव यू द लिंक. ओके, सो दे विल गिव यू द लिंक. प्लीज टॉक विथ योर मेंटर्स, प्लीज टॉक विद द मैनेजमेंट. कोई मुझे मत पिंग करना कि सर ऐड करो करके, ठीक है, बिकॉज मेनी ऑफ यू स्टार्ट पिंगिंग मी. ओके, सो मैं वो चीज नहीं करूंगा. आपको आपके मैनेजमेंट से बात करनी है, एंड आपको बेसिकली यू विल हैव टू डू द थिंग. ओके, इज एवरीबॉडी कंफर्टेबल? शैल आई मूव अहेड? Please tell me. Okay, please join this group as soon as possible, because this group has been exclusively created for sharing up Hindu, for sharing up the analysis of the geography as an optional too. So जो भी important चीजें रहेंगी मैं इस पे share करना शुरू करूंगा. Okay, Telegram group, yes Saurabh, it's Telegram group, geography optional study IQ. Okay, चलो. And इसको छोड़ के please don't waste your time in reading newspaper. Please don't waste your time कि आप खुद से कर रहे हो. Okay, जितना मैं दे रहा हूँ उतना more than enough है. I'm giving you my 2000% guarantee. ठीक है, इससे बाहर आएगा नहीं आपके एग्जाम पे. Okay, you can't see the link, Garima ma'am. Okay, वो आपको मैनेजमेंट से लेनी पड़ेगी, and they will add you up. So contact the management and they will add you up. I'm again reiterating, मैनेजमेंट को contact करो, वो आपको इस ग्रुप में ऐड करेंगे. Okay, this is the official group of our institution, of our organization. So इसमें please add होइएगा, because every day you will have updation of the articles. And मैक्सिमम आर्टिकल्स जो एक दिन में आते हैं वो 5-6 रहते हैं. अभी इस हफ्ते में तो हार्डली आई एम सीइंग दैट एवरी डे 1 or 2 आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट. सी, हिंदू एनालिसिस, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी पैरामाउंट. आपको क्या नहीं पढ़ना ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ आप लोगों के लिए. ओके, चलो, सो लेट्स कम बैक. Let's start with our analysis of the things that we proceeded in the last class. So in the last class, I did introduce you to the equatorial latitudes. Okay, I did introduce you to how do we have the equatorial rainforest, and equatorial regions पे सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है. Okay, so why? Because of 3 things. Number first, because of the unchanging orientation of equator with respect to the sun. इक्वेटर की पोजीशन जो है वो सन के रिगार्डिंग फिक्स्ड है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस ऑन इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर you have what? You have intense vertical convection. Second reason, because of this intense vertical convection, you have basically you have formation of what? Cumulonimbus clouds. Such clouds which extend for a height of more than 10 to 13 kilometers. Okay, इक्वेटर पे जो परपेंडिकुलर इंसोलेशन है उसके वजह से हवा कंटिन्यूअसली ऊपर उठती है इक्वेटर से. बिकॉज ऑफ दिस यू हैव हेवी कंडेंसेशन. हेवी कंडेंसेशन will result into heavy precipitation too. So please remember this. That in equator, please remember this, that in equatorial latitudes you will have to keep in mind that because of intense precipitation you will have to be very cautious with regards to the formation of forest, because as soon as you will have heavy precipitation you will have formation of the dense equatorial rainforests. So you will have the formation of dense equatorial rainforest. Dense equatorial rainforest, 3 things very very important. Dense क्यों? बिकॉज यहाँ की जो कैनोपी रहेगी फॉरेस्ट की, कैनोपी इन द सेंस जो ट्री कवर रहेगा, ये सबसे ज्यादा डेंस रहेगा धरती पे. ओके, सो लोअर कैनोपी में आपको श्रब्स मिलेंगे, आपको छोटे बुशेस मिलेंगे, आपको क्रीपर्स मिलेंगे जो बेसिकली सनलाइट के लिए फाइट कर रहे हैं. एंड इन द मिडिल यू विल हैव बिग बिग ट्रीज, बहुत ऊंचे जाने वाले पेड़ भी आपको मिलेंगे. सो बहुत डेंस कैनोपी, इसलिए डेंस. देन एवरग्रीन. एवरग्रीन क्यों? बिकॉज दे विल बी ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. ओके, बारिश 12 ही महीने है, तो 12 ही महीने दे विल बी ग्रीन. एंड रेन फॉरेस्ट, व्हाई? बिकॉज दीज फॉरेस्ट आर बेसिकली एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द हेवी डाउनपोर. सो डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स. एंड मैंने आपको असाइनमेंट में दी थी कि अमेज़न का देखिएगा, प्लीज सी ऑफ कॉन्गो. तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है,
सो रशिया ने नेचुरल गैस बंद कर दिया यूरोप को, तो ऑल द यूरोपियन कंट्रीज आर नाउ डाइवर्टिंग टुवर्ड्स अफ्रीका, है ना। अब यूरोप के लोग हैं, तो यूरोप के लोगों को बिना बाथटब के, बिना एयर कंडीशन के कुछ हो सकता है क्या? उनको तो बाथटब चाहिए, दिन में 500 लीटर पानी वो यूज करेंगे, गर्म पानी, है ना। अब पानी गर्म कहाँ से करेंगे? ओके, उनके घर में बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स रहते हैं, बड़े बड़े टीवी रहते हैं, तो कहाँ से इतनी लग्जरी फुलफिल करेंगे? पावर ही नहीं है तो। सो फॉर नाउ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज आर नाउ डाइवर्टिंग टुवर्ड्स अफ्रीका। रशिया ने बंद कर दिया, तो चलो अफ्रीका की तरफ डाइवर्ट होते हैं। सो कॉन्गो के गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल कॉन्गो के जो रेन फॉरेस्ट है उनका बेसिकली डिफॉरेस्टेशन की परमिशन दे दी, ताकि आप वहां से कोल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, सो बेसिकली द फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो आर बीइंग क्लियर्ड फॉर द लग्जरी ऑफ यूरोप। ओके, so this is how basically we are making a huge impact on the natural ecosystem, and sadly this impact is not good. This impact is very very bad. Okay, just for the luxury of the human beings, for the luxury of handful 1 to 2 million human beings, we are basically succumbing the natural ecosystem. So very bad. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने आपको यहाँ पे बोर्नियो का बताया था कि बोर्नियो का देखिएगा। ओके, सो यू हैव पाम पॉट कल्टीवेशन। सो आप सब इंक्लूडिंग मी, ओके, मैं उसमें भी खुद को भी इंक्लूड करता हूँ। ओके, प्लीज बी वेरी फ्रैंक एंड कोई छुपाएगा नहीं। आप में से हर किसी ने कभी ना कभी मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा, डोमिनोज खाया है कि नहीं खाया है? बताइए, हैव यू ईटन केएफसी, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज? खाया है कि नहीं खाया है? अच्छा चलो, आपने लेस तो खाए होंगे, आपने कुरकुरे तो खाए होंगे, ये तो आप नहीं नहीं बोल सकते हो। ओके, लेस खाए होंगे, कुरकुरे खाए होंगे, ये तो आप नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हल्दीराम का कुछ खाया होगा आपने, है ना। ऐसा तो आप बोल ही नहीं सकते कि सर ये तो सब चीजें हमने कभी खाई ही नहीं। एवरीथिंग यू हैव इटन। सो विच ऑयल डू दे यूज? डू दे यूज राइस ब्रान ऑयल? डू दे यूज सैफलॉर सनफ्लावर ऑयल? डू दे यूज ग्राउंडनट ऑयल? क्या वो ये ऑयल यूज करते हैं क्या? ओके, ऑल ऑफ देम यूज ब्लडी पाम ऑयल। पाम ऑयल इज वेरी चीप। ठीक है, तो आपको फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, आपको डबल चीज बस पिज्जा खाना है, आपको बर्गर खाना है, उसके लिए क्या हो रहा है, बोर्नियो के रेन फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं। ओके, सो वेरी सैड ट्रेंड कि ये जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है, फास्ट फूड इंडस्ट्री, ओके, द चीप चाइनीज फर्म्स, ओके, द चीप अमेरिकन फर्म्स, ओके, all of them go for unsustainable cultivation of palm pods. Okay, so because of this the rainforests of Borneo are cleared like anything. Like if I just showcase you, okay, देखिए आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पढ़ना है। ओके, ओके, so if I just type palm deforestation, okay, and if I just showcase you the images, okay, palm deforestation की अगर आपको जस्ट मैं images शो करूं, okay, just see this particular image, okay, okay, can you see this image? देखो, दूर दूर तक खाली पाम पॉट के कल्टीवेशन है, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड लाइक एनीथिंग, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड लाइक एनीथिंग। सो गाइस, दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स जो हम लोग बेसिकली कॉज कर रहे हैं। मैं आपको नहीं, मैं खुद को भी उसमें दोषी मानता हूँ। एंड वी एज जोग्राफर्स, यू एज द फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एजुकेट करूं एंड आप और लोगों को एजुकेट कीजिए कि प्लीज don't fall for the gambit of fast foods, don't fall for the gambit of cheap Chinese, because हमारे ग्रिड के लिए, हमारे पेट भरने के लिए वी आर क्लियरिंग द नेचुरल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। सो दिस इज वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड यू वोंट बिलीव गाइस दैट एवरी डे इन इंडोनेशिया, एवरी डे, हर रोज, every day in Indonesia, at least 5 to 6 species are going extinct. Every day in Indonesia, 5 to 6 species are going extinct. Every day. सोचो एक महीने में कम से कम 30 species extinct हो रही है, and in a year roughly you will have 60 to 100 species going extinct every day. Okay, so this is a very sad state of affairs, and when we'll do biodiversity management, when we'll do biodiversity loss in environmental and biogeography, तो हम लोग इसके reasons और डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये बहुत बड़ा प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपको मेंस में पूछा जा सकता है, बिकॉज
द सेम थिंग इंडियन गवर्नमेंट इज नाउ डूइंग इन नॉर्थ ईस्ट. सो नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट ने पाम पॉट कल्टीवेशन के लिए परमिशन दे दी है. एंड ये जो आप देख रहे हो ना पाम पॉट, ओके, सो दिस पाम पॉट, पाम का जो ट्री है, ये सारे पाम के ट्रीज है. सो ऑल ऑफ दीज ट्रीज आर पाम ट्रीज. These palm trees are basically invasive species. They are basically which species? Invasive. ये नाम ध्यान में रखना. Invasive. Invasive का मतलब ये है कि once you start cultivating palm pod, it spreads like anything. इट स्प्रेड्स लाइक एनीथिंग. ओके, पूरे लोकल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी जमीन वो ले लेता है. ओके, सो इट्स अ एलियन स्पीशीज. यस मुस्कान, यू आर राइट. ओके, so please remember this, that palm pod cultivation is basically unsustainable for us. Okay, and because of this, again you have what? Again you have heavy amount of deforestation. Okay, now the same thing is happening in west coast of अफ्रीका टू. ओके, तो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका का भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, अलोंग नाइजर, अलोंग द गल्फ ऑफ गिनी. सो दिस कोस्ट ऑफ अफ्रीका, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ गिनी कोस्ट. ओके, लोकेशंस मैं पूरे कराऊंगा आपको. सो गल्फ ऑफ गिनी कोस्ट इसे कहते हैं. ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड का कोकोआ पॉड कल्टीवेशन होता है. कोकोआ पॉड. ओके, कोकोआ पॉड इज फ्रॉम वेयर चॉकलेट इज मेड. ओके, सो आप सबने कैडबरी तो खाया होगा, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, ठीक है. सो एवरीवन, व्हाट यू डू इज, अब जैसे ये क्लास खत्म हो गई, सो गो डाउन वेयर एवर यू आर एंड जस्ट बाय वन डेयरी मिल्क. ओके, एक डेयरी मिल्क ले लो कैडबरी की. ओके, एंड वो डेयरी मिल्क के पीछे टर्न करना, आपको लिखा होगा 100% सस्टेनेबली सोर्स कोकोआ. 100% सस्टेनेबली सोर्स कोकोआ ऐसा लिखा होगा वहां पे, ठीक है. अब guys, it's corporate culture. We don't know how much we can trust these big FMCGs. Okay, but you know the sad state of affairs that is happening in Nigeria. Okay, on an average, a cocoa pod cultivating farmer, okay, 100 ग्राम कोकोआ बनाने के लिए, 100 ग्राम चॉकलेट बनाने के लिए, फॉर मेकिंग 100 ग्राम ऑफ चॉकलेट, आपको कितने पेड़ लगते हैं? 4 पेड़ लगते हैं कोकोआ के. how much how much trees you require for making 100 gram of your dairy milk? 4 cocoa trees. 4. ठीक है. so यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है, ऑल ऑफ देम हैव बीन क्लियर्ड फॉर कोकोआ पॉड कल्टीवेशन. पूरा का पूरा कोकोआ पॉड का कल्टीवेशन के लिए ये यूज किया. एक कोकोआ का पॉड रहता है, पॉड के अंदर कोकोआ के सीड्स रहते हैं, तो उनको निकाल के साफ करना पड़ता है. यू हैव टू ड्राई देम आउट एंड यू विल बी शॉक्ड टू इवन मोर हियर दिस. ओके, कि यहाँ पे एक एवरेज फार्मर को जो कोकोआ पॉड कल्टीवेशन करता है बेचारा, उसकी जो एवरेज अर्निंग है ना, एक दिन की एवरेज अर्निंग, इट इज लेस देन $10. इट इज लेस देन $10. समवेयर इट इज ओनली $1. खाली $1 की अर्निंग है यहाँ पे एक दिन की एक फार्मर की. सो व्हाट डू द बिग कंपनीज डू? वो यहां से कोकोआ पॉड ले लेते हैं ड्राई आउट and they all take it to Netherlands. They all take it to Belgium because Belgium is the chocolate capital of the world. So जो बेसिकली आपको 100 ग्राम की कैडबरी मिलती है इंडिया में, लेट से कि आपको मिलेगी 50-60 रुपए की, वही 100 ग्राम दे मार्केट इट एज लग्जरी प्रोडक्ट्स. एंड वही 100 ग्राम की आपको कैडबरी बेसिकली अगर आप बेल्जियम में जाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. एंड हम लोग तो इतने बेवकूफ है कि हम लोग बेसिकली सेम चीज, सेम कैडबरी हम लोग $1000 की भी ले लेंगे. ओके, सो वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट यू हैव. एंड आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, अनसस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग ट्रेंड इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड टू. ओके, सो इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस? कैन आई मूव अहेड? Please tell me. Hello, can you all hear me, guys? Okay, shall I move ahead? Okay, chalo. So now all of you are comfortable with regards to what? With regards to why do we have rainforest on the equator? Now let us turn our attention to the tropical latitudes. Okay, sir, आपने इक्वेटर के बारे में तो बता दिया. Now let us try to understand what is happening at the tropical latitudes. Okay, so if I'm basically discussing with you कि कैसी है चीजें, how are things happening. So as a rule,
एज अ रूल, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्वेटर, सो इक्वेटर पे क्या है, सन की रेज डायरेक्टली परपेंडिकुलर है. बिकॉज ऑफ डायरेक्ट परपेंडिकुलर सन रेज यू आर हैविंग इंटेंस वर्टिकल कन्वेक्शन, बहुत गर्म है. एंड एज वी मूव टुवर्ड्स पोल्स द टेम्परेचर इन जनरल रिड्यूसेस. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वी कॉल इट द लैटिट्यूडिनल कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर. ओके, so equatorial regions and the tropical regions are basically hotter and the polar regions are basically colder. So if I'm discussing the equatorial latitudes and let's say I'm going till 30 degrees north and south, okay, इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर एंड 30 डिग्री south. So 30 degrees north and 30 degrees south. If I'm talking about these latitudes are basically energy surplus. These latitudes are basically what? They are energy surplus latitudes. Surplus in the sense of what? यहाँ पे सन की एनर्जी ज्यादा मिल रही है आपको एज कंपेयर टू दी पोलर लैटिट्यूड्स. पोल्स पे जा रहे हो तो एनर्जी आपको कम मिल रही है. So the equatorial and the tropical latitudes, they are called as energy surplus, whereas the polar latitudes, they are called as energy deficit. They are called as energy deficit latitudes. So please keep this in mind. The equatorial latitudes and the tropical latitudes. अभी तक मैंने आपको tropical latitudes क्या है ये बताया नहीं है. I will teach you what do you mean by tropical latitudes now. Okay, but please remember that the equatorial latitudes and the tropical latitudes, they are energy surplus, whereas the polar latitudes, they are energy deficit. तो बेसिकली आप धरती पे जो भी एयर सर्कुलेशन देखते हैं, जो भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन देखते हैं, गाइस आई एम टेलिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. प्लीज फोकस ऑन मी वेरी वेरी प्रॉपरली. मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ. आई विल रिपीट इन हिंदी एंड आई विल ऑल्सो रिपीट इन इंग्लिश. फर्स्ट आई एम डूइंग इट इन हिंदी, देन आई विल डू इट इन इंग्लिश. प्लीज ध्यान से सुनिएगा. मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ये शब्द बहुत अमूल्य है. ओके, तो धरती पे जो भी हवा सर्कुलेट होती है, जो भी आपको एटमॉस्फेयर में, जो भी धरती का एनवेलप ऑफ गैसेस है जो धरती को सराउंड करता है, उसमें जितनी भी हलचल है, उसमें जितनी भी टर्बुलेंसेस है, उसमें जितनी भी मूवमेंट है, ये मूवमेंट किस वजह से है? कि ये जो एनर्जी का इम्बैलेंस है, कि 0 to 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ में एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे हीट रिसिप्ट ज्यादा है. एंड अगर आप पोलर लैटिट्यूड्स की तरफ जा रहे हैं, 60 डिग्रीज एंड नॉर्थ, 60 डिग्रीज एंड साउथ नीचे की तरफ, तो ये जो इम्बैलेंस है एनर्जी रिसीव्ड का, इस बैलेंस का मेंटेनेंस, इस इम्बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए पूरी की पूरी हवा धरती पे सर्कुलेट होती है. इसलिए आपको विंड्स मिलती है धरती पे, लाइक ईस्टर्लीज, लाइक वेस्टर्लीज एंड दी पोलर ईस्टर्लीज. सो प्लीज रिमेंबर, धरती के एटमॉस्फेयर में जितने भी सर्कुलेशंस है, वो किस वजह से है प्राइमरीली? वो इस वजह से प्राइमरीली सो एज टू बेसिकली डू अवे विद द हीट imbalance of Earth. Okay, now I'm again reiterating in English. Okay, so the equatorial latitudes and the tropical latitudes are energy surplus, whereas the polar latitudes and above, they are energy deficit. So whatever circulations that we have in the atmosphere, whatever turbulences that we have in the atmosphere is basically due to the variation of the energy received on Earth. Okay, so energy will be transferred from energy surplus to energy deficit, and energy, basically heat, will be transferred from energy surplus to energy deficit, and cold air will be transferred from the energy deficit to energy surplus. So this is how our atmosphere circulates. This is how the air in the atmosphere basically circulates. Now ये जो सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इसी सर्कुलेशन से डिफाइंड है हमारे धरती के प्राइमरी विंड्स. इसी सर्कुलेशन से डिफाइंड है हमारे धरती के मेजॉरिटी ऑफ द लैटिट्यूड्स. ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड, I will first be introducing you what do you mean by Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and then we'll be having a detailed discussion on the topics hereafter. Okay, so please listen to me very very carefully. अभी कोई कुछ मत लिखो. ओके, ये लिखने की चीजें नहीं है, खाली समझने की चीज है. मैं जब बोलूंगा तभी लिखना. ओके, सो नाउ again let me consider the orbit of Earth around the sun. Okay, so this is our sun. Okay, this is the orbit of Earth around the sun like this. Okay, so again I'm considering four positions.
Okay. Position number 1. Okay. Position number 2, 3, and 4. Okay. Okay. So now you tell me, okay, if I'm considering position number A, okay, if I'm considering position number A, okay, which hemisphere of Earth is pointing the sun? Which hemisphere of Earth is pointing the sun? Okay, this is our equator, so north, south, okay, north, south. Which hemisphere is pointing towards the sun in this? Which hemisphere is pointing towards the sun? Everyone, I want answer from everyone. Yes, but naturally the northern hemisphere is pointing towards the sun. Which hemisphere is pointing away from the sun? Which hemisphere is pointing away from the sun? But naturally the southern hemisphere. But naturally the southern hemisphere. Am I right? So if I take you to position A of the Earth's orbit, अगर मैं आपको position A में लेके जाऊं, so if this is the sun, my left hand is the sun and this is the Earth. So which hemisphere is pointing? The north hemisphere is pointing towards the sun and the southern hemisphere is away from the sun. Okay. So now what will happen at this position? What will happen at this position? So this will mark up the northernmost extent of sun with respect to earth, in the sense of what, कि यहाँ पे sun जो है with regards to earth, it has moved little bit up. See, the sun is stationary, the earth is revolving around the sun. So sun की ये जो apparent movement हुई है किस वजह से हुई है? Because of earth's revolution around the sun. अभी धरती यहाँ पे है, so the earth is tilted like this. So because of this the sun has apparently come up with respect to the sun. अगर मैं घुमा के इस तरफ ला लूं, if I'm talking about now like this position, ये position बात कर रहा हूं, so with respect to earth sun has moved where? The sun has moved in the southern hemisphere. देखिए यहाँ पे ये है northern hemisphere में, ये घूम के आ गया यहाँ पे in the southern hemisphere like this. So now if I take you to position B, so in position B the southern hemisphere is pointing towards the sun, whereas the northern hemisphere is pointing towards the outer space, like it is pointing away from the sun. So what is happening at position A and B? So position A and B will mark up, they will be showcasing us those two extremities जहां पे sun कहां पे जाएगा? Furthermost in the northern hemisphere and furthermost in the southern hemisphere. मैं फिर से बोल रहा हूं, पोजीशन A एंड B, ये दो पोजीशंस हमें क्या डिनोट करेगी? ये दो पोजीशंस हमें वो दो पोजीशंस डिनोट करेगी जहां पे सन जो है मैक्सिमम जाएगा आइदर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और मैक्सिमम इट विल कम डाउन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. So these two positions will mark up the extremities of the apparent movement of sun with regards to the earth. So sun जो है it will go in the northern hemisphere and it will come down, it will go towards the southern hemisphere and again this cycle will reverse क्योंकि धरती जो है धरती around the sun घूम रही है. So sun will have what? Sun will have apparent migration between the northern hemisphere and the southern hemisphere. So जो sun है हमारा उसका apparent migration. Apparent migration in the sense मैं क्यों बोल रहा हूँ? I am not talking about real. मैं apparent क्यों बोल रहा हूँ? Because क्या sun सही में migrate कर रहा है? No. The position of sun with respect to the earth is fixed. Sun's position is not changing. Dare I say the earth's position with respect to the sun is changing. Earth का orbit change हो रहा है around the sun. So because of the earth's revolution around the sun, okay, earth is not moving, Dr. Garima, she is revolving. Okay, the Gaia, the mother earth is revolving. Okay, it's, let's not say moving, ma'am. Okay, so ये जो रिवॉल्यूशन चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस सन का बेसिकली ऊपर नीचे माइग्रेशन हो रहा है बिटवीन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. सो नॉर्थ एंड साउथ में माइग्रेशन हो रहा है. सो ये जो नॉर्थ एंड साउथ में जो माइग्रेशन हो रहा है, सो सन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम इन द सेंस द मैक्सिमम माइग्रेशन ऑफ सन, the maximum extent of sun in the northern hemisphere will be denoted by which latitude? You tell me.
जो सन की मैक्सिमम मूवमेंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसे हम किस लैटिट्यूड से डिनोट करेंगे कि सन यहां तक के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ सकता है? प्लीज टेल मी which latitude will be denoting that. You know the answer, try to answer. 23.5 degree. Yes, all of you are extremely right. See, you all know everything. So tropic of cancer जो है, if I'm talking about tropic of cancer, so tropic of cancer क्या denote करेगा? Tropic of cancer will denote that latitude wherein the sun will have its maximum northern extent. ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बच्चों वाली डेफिनेशन बता दी कि हाँ सर, सर नॉर्थ में है तो यहां तक के सन आ सकता है। अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल वाली डेफिनेशन ले लेते हैं। सो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाली डेफिनेशन क्या है? सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल डिनोट दैट लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल डिनोट दैट लोकेशन ऑन अर्थ where in the northern hemisphere to the maximum extent the sun's declination is 90 degree। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली वो लैटिट्यूड रहेगा maximum in the northern hemisphere, the maximum latitude in the northern hemisphere where the sun's declination will be 90 degree। sun's declination 90 degree means यहाँ पे sun की rays will fall 90 degree, so the sun's rays will be perpendicular 90 degree at tropic of cancer। but ये कब होगा? ये क्या हर 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 दिन होगा on the earth's revolution around the sun? will it happen every day? no, ये साल में एक ही बार होगा जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहेगा। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के किस दिन ऊपर रहेगा? सन विल बी अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट पोजीशन नंबर ए एंड दिस पोजीशन इज डिनोटेड बाय 21st of June एंड इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं समर सॉल्स्टिस। we call this what? we call this summer solstice। so summer solstice वो पोजीशन रहेगी जहां पे सन की रेज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री पड़ रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन की रेज कभी भी परपेंडिकुलर गिर ही नहीं सकती है। इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये ऐसी लैटिट्यूड है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहां पे सन की रेज विल फॉल परपेंडिकुलरली मैक्सिमम। इसके ऊपर सन की रेज विल नेवर फॉल परपेंडिकुलरली। अबव दिस द सन्स रेज विल ऑलवेज फॉल हाउ? they will always fall at a slant angle। and sun की rays tropic of cancer पे कब perpendicular रहेगी? on which day? they will perpendicular on 21st of June। so on 21st of June if I take you to tropic of cancer which passes near Bhopal in Madhya Pradesh। okay, कोई है मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है? उदयपुर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई है? बोकारो झारखंड, बोकारो से वगैरह कोई है यहाँ पे? ओके, त्रिपुरा, यस, एनीबडी इन द क्लास? ओके, सो अगर मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लेके जाओ कि आयुष सर आप इंदौर से हो तो आपके घर के तो बहुत पास से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गरिमा मैम इफ यू आर नियर उदयपुर सो लाइक माउंट आबू, सो वहां पे आप ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेगी। सो ऑन 21st of June इफ यू गो टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो आपको सन आपके सिर के ऊपर दिखेगा ठीक 12 बजे। सो 12 बजे सन आपके सिर के ऊपर रहेगा एंड वो बेसिकली मैक्सिमम एक्सटेंट रहेगा सन का इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके ऊपर सन की रेस परपेंडिकुलर नहीं गिरेगी। इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस? प्लीज टेल मी। मैं इसके डायग्राम भी निकाल के दिखाऊंगा आपको ताकि और चीज समझ में आ जाए। इज एवरीबडी अप्रिशिएटिंग दिस? कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं? आर यूर कंसेप्ट्स गेटिंग क्लियर? ओके, ये बेहद आसान कंसेप्ट है बट ये कंसेप्ट आगे जाके आपको बहुत तकलीफ देते हैं इन क्लाइमेटोलॉजी। इसलिए मैं आपके सारे कंसेप्ट्स पहले क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लाइमेटोलॉजी यूं समझ में आ जाए। कैन आई मूव अहेड? डू आई हैव योर परमिशन? ओके, चलो। सो ये तो हो गया सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बेसिकली क्या होगा? यू विल हैव योर मैक्सिमम एक्सटेंट ऑन सन रेज ओके ऑन 21st of June। now if I take you to position B पे क्या हो रहा है? the tropic of Capricorn is now facing the sun directly। the southern hemisphere is facing the sun directly, so sun will migrate into where? The sun will migrate into the southern hemisphere। so as soon as sun migrates into southern hemisphere, the southern hemisphere will have summers and sun will be directly overhead on which latitude? Sun will be directly overhead on tropic of
कैप्रिकॉन। सो जैसे हमारा बेसिकली नदर्न हेमिस्फीयर है, वैसे ही हमारा बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर में चीज होगी कि सन अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है ऑन 21st of June, so sun will be directly overhead on tropic of Capricorn, which is denoted by 23.5 degrees south, on which day sun will be directly overhead on tropic of Capricorn on 22nd of December. On 22nd of December. So 22nd of December will mark the longest day in the southern hemisphere. It will be called as winter solstice. It will be called as winter solstice. And northern hemisphere will be pointing away from the sun. So अगर अभी हम लोग northern hemisphere देखेंगे, so northern hemisphere में आपके क्या रहेंगे, यहाँ पे you will have winters and southern hemispheres में आपको मिलेंगे summers. Okay. So at present, if I take you to the south of equator, at present if I take you to the south of equator, so साउथ ऑफ इक्वेटर में फिलहाल क्या चल रहे होंगे, विंटर्स. नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में फिलहाल हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, समर्स चल रहा है. ओके, सो 21st of June basically marks the beginning of summer in the northern hemisphere, and 21st of December or 22nd of December officially marks the beginning of summer in the southern hemisphere. So south and north के seasons exactly उल्टे. अब आप मत बोलना सर हमारे यहाँ तो मानसून है, इंडिया अलग है, ठीक है, इंडिया इज वेरी डिफरेंट. इंडिया के लिए एक ही वर्ड मैं बोल सकता हूँ आपके लिए, कि जो वर्ड मुझे अभी तक यानी ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी फ्रॉम 8+ years, एक ही वर्ड आई कैन डिस्क्राइब इंडिया इन जस्ट वन वर्ड, एंड दैट वन वर्ड इज खिचड़ी. ओके, इंडिया में सारी चीजों की खिचड़ी हो जाती है, ठीक है. सो खिचड़ी इन यूनिटी, खिचड़ी इन डाइवर्सिटी, खिचड़ी इन थॉट्स, खिचड़ी इन डिप्लॉयमेंट, हर जगह पे हमारे यहाँ पे चलती है खिचड़ी, ठीक है. अगर कोई नॉर्थ इंडिया से है हमारे क्लास में, तो ये नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा वर्ड है. वो वर्ड मुझे नॉर्थ इंडिया में आके पता चला व्हेन आई केम टू दिल्ली फॉर माय प्रिपरेशन. सो दैट वर्ड इज कॉल्ड एज बसड़. ओके, सो इंडिया इज आइदर खिचड़ी और इंडिया इज आइदर बसड़. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इंडिया सीजन, बिकॉज इंडिया में अभी फिलहाल हमारा चल रहा है साउथ वेस्ट मानसून सीजन. ऐसा दुनिया में नहीं है कहीं पे, ठीक है. इट इज यूनिक टू इंडिया सच काइंड ऑफ वेदर. ओके, साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया को ये यूनिक वेदर मिलता है हर साल. सो वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू गॉड कि इसी वजह से वी कम अंडर द राइस बाउल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, हमारे यहाँ पे राइस उगता है, हमारे यहाँ पे शुगर केन उगता है, बाकी किसी के यहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है, ठीक है. सो हमारे पे इतने क्रॉप्स ग्रो होते हैं. मिल्क वी आर नंबर 1. So we should be thankful to the geography. We should be thankful to the Earth's climate कि हमें ये सीजन नसीब में है. बाकी बहुत कम कंट्रीज को मानसून सीजन नसीब में होता है, ठीक है. So let's that discussion is apart completely. But 21st of June will mark up the beginning of summers in the northern hemisphere. Okay, and 22nd of December will mark up the beginning of summers in the southern hemisphere. Please keep this in mind very very properly. And now मैं आपको simple diagram के through explain कर देता हूँ कि कैसे होगा. So imagine this is our sun like this. Okay, imagine this is our sun like this. So on this side I'm drawing 22nd of December. Okay, on this side I'm drawing 21st of June. Okay, I'm drawing 21st of June on this side. Okay, so please focus on it very very properly. Okay, okay, so see now what is happening on 21st 22nd of December. Sun's rays are falling perpendicularly on tropic of Capricorn. This is 23.5 degrees south, this is 0 degree equator. And what is happening on 21st of June, the sun's rays are falling perpendicularly on 23.5 degrees north. So this is tropic of Cancer and this is tropic of Capricorn. So 21st of June will mark up the longest day in the northern hemisphere. So जो longest day रहेगा कहाँ पे,
नदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा. सो विल हैव लॉन्गेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड इट विल मार्क अप द शॉर्टेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन एंड ठीक उल्टा यहाँ पे. So 22nd of December will mark up the longest day, where it will mark up the longest day in southern hemisphere and it will mark up the shortest day in the northern hemisphere. So जैसे सन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डे लेंथ बढ़ती जाएगी. आप देखिएगा समर्स में आपकी डे लेंथ बढ़ती जाती है. अभी नाउ वी आर इन जुलाई, सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपकी डे की लेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी. एंड आप जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, as soon as you will move from equator towards the poles, the day length will decrease if you are going to December in the northern hemisphere and southern hemisphere में इसका ठीक उल्टा. So the 21st of June will mark up the longest day in the northern hemisphere and it will mark up the shortest day in the southern hemisphere, and the reverse will be happening on 22nd of December. 22nd of December पे क्या होगा? 22nd of December पे you will have the longest day in the southern hemisphere and the shortest day in the northern hemisphere. Is everybody now comfortable? Shall I move ahead with regards to discussion of even more important thing? Please, do I have your permission to go ahead? Guys, can you hear me? Hello? Okay, okay. समझ में आ रही है सारी चीजें? Yeah? Okay, okay. चलो, चलो. So now, let me try to give you an analysis of this location, this and this. Okay, so now if I talk about northern pole and if I talk about southern pole on 21st of June, देखो नॉर्थ पोल जो है वो सन को कैसे पॉइंट कर रहा है? इट इज पॉइंटिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन. अगर धरती रोटेट भी हो रही है, सो क्या नॉर्थ पोल की पोजीशन चेंज हो रही है क्या विद रिस्पेक्ट टू द सन? नॉर्थ पोल जो है हमारा वो तो सन को हमेशा पॉइंट कर रहा है. एम आई राइट? सो इफ आई टेक यू टू नॉर्दर्न पोल ऑन 21st ऑफ जून, अगर मैं आपको नॉर्थ पोल पे लेके जाऊं ऑन 21st ऑफ जून, यू विल हैव व्हाट? You will have 24 hours of daylight. You will have 24 hours of daylight. And as the southern pole is pointing away from the sun, on the south pole you will have 24 hours of darkness. You will have 24 hours of darkness. You will have what? You will have 24 hours of darkness. क्यों? Because southern pole तो sun को basically face ही नहीं कर रहा है. The same opposite thing will be happening on 22nd of December. So 22nd of December पे north pole पे क्या होगा? You will have 24 hours of darkness. यहाँ पे 24 घंटे की रात रहेगी. And on the southern pole you will have what? You will have 24 hours daylight. सो जो हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल है बेसिकली, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी प्रॉपरली. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी प्रॉपरली. जो हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल है, दे एक्सपीरियंस सन ओनली फॉर 6 months ऑफ ईयर. 6 महीने तक यहाँ पे सनराइज होता नहीं है एंड 6 महीने तक यहाँ पे सूरज डूबता नहीं है. सो यू हैव 6 months बेसिकली सनराइज ओवर हियर एंड 6 months ऑफ डार्कनेस. 6 महीना हमारे दोनों पोल्स जो रहेंगे वो डार्कनेस में रहेंगे एंड 6 महीना ये लाइट में रहेंगे. ओके, लाइट इन द सेंस, आप बताइए ना. आई हैव टॉट यू, सो आई एक्सपेक्ट सम आंसर्स फ्रॉम यू. क्या आपको यहाँ पे सनलाइट उतना प्रखर मिलेगा? विल यू फाइंड द सेम इंटेंसिटी ऑफ सन एट द नॉर्दर्न पोल्स एंड एट द साउथ पोल एज कंपेयर्ड टू इक्वेटर? विल यू फाइंड द सेम थिंग? नो, नहीं. सन कैसा मिलेगा आपको? सन, यू विल हैव डिफ्यूज्ड सनलाइट, यू विल हैव ट्वाइलाइट. ओके, नाउ आपकी जो स्क्रीन है अभी, ओके, आई एम मार्किंग अप द एक्सट्रीमिटीज जो मुझे दिख रहा है. ओके, सो दिस इज योर स्क्रीन, एम आई राइट? ओके, ये आपकी स्क्रीन है. ओके, मेरे हाथ को फॉलो कीजिए, ये आपकी स्क्रीन है, बराबर है? आर यू ऑल कंफर्टेबल विद द स्क्रीन? ओके, सो नाउ इफ आई एम टेकिंग यू टू नॉर्थ पोल ऑन 21st ऑफ जून, सन ओवरहेड बिल्कुल भी नहीं आएगा. सन ओवरहेड आएगा नहीं. आप बोल रहे हो सर 24 घंटा डे है तो सन तो बढ़िया ऊपर आना चाहिए. नहीं, यहां पर भी सनलाइट जो रहेगा वो डिफ्यूज मिलेगा, आपको ट्वाइलाइट मिलेगा. तो सन कैसा रहेगा यहाँ पे आप देखिएगा.
हाउ विल द सन बी? ओके, ये जो आपके स्क्रीन का जो नीचे का पार्ट है इसको आप हॉरिजॉन कंसिडर कीजिए। आपकी जो स्क्रीन है जिस डिवाइस पे आप मुझे देख रहे हो, तो ये जो बाउंड्री है मेरे नीचे की, तो इसको आप हॉरिजॉन कंसिडर कीजिए। तो सन जो है, सन ऐसा रहेगा। ओके, सन विल बी लाइक दिस ओनली। दिस इज हाउ यू विल हैव 24 आवर्स डे लाइट। सन ऊपर नहीं आएगा, सन विल नेवर कम अबव, सन विल जस्ट राइज अप। ओके, इट विल स्टे हियर ओनली, ये ऊपर नहीं जाएगा। जबकि आप इक्वेटर पे जाओगे, ट्रॉपिक्स पे जाओगे, तो सन ऊपर आएगा एकदम ऐसे। सो सन विल बी ओवरहेड एट 12 पीएम। जो लोकल टाइम हम लोग कहते हैं, जैसे इंडिया का लोकल टाइम है 82.5 डिग्रीज आईएसटी। आईएसटी इन द सेंस क्या, कि वहां पे सन जो है 12 बजे आपके ऊपर आ जाएगा। ओके, सो बट यहाँ पे सन कैसा रहेगा? सन विल बी लाइक दिस ओनली। सो इफ आई एम शोकेसिंग यू द sunrise and sunset, like if I'm showcasing you 24 hours day at the poles, so please see this properly. Okay, okay, okay. Now please see this, how the sun is basically showcasing. Everybody is able to see the screen properly? Please tell me. Is everybody able to see the screen properly? Please tell me. Is everybody able to see the screen properly? Please tell me. Okay, so this is how the sun is. Okay, sun जो है basically आपके ऊपर नहीं जाएगा, sun basically ऐसे ही रहेगा। sun कभी भी आपके ऊपर नहीं जाएगा, sun will never come above, sun horizon से ऊपर आएगा and ये ऐसा ही रहेगा। so ये sun horizon से ऊपर आ गया, ये sun ऐसा ही है। so for 24 hours you will have such kind of sunlight at the poles. Is everybody appreciating this? Please tell me. Okay, सो सन विल नेवर कम अबव, सन हमेशा यहीं पे रहेगा, सन ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इज दिस इंटरेस्टिंग गाइस? आपको मजा आ रहा है ऐसे ज्योग्राफी पढ़ के? ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिसिप्लिन एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन कोचिंग जो स्टडी आईक्यू आपके लिए लाता है। ओके, कि आप बेसिकली वीडियोस से समझ पाते हैं कि कैसे आपको 24 घंटे का दिन रहता है। ओके, सी द सन इज नॉट सेटिंग, सन यहीं पे होरिजोन पे है, बस ऐसा ही है सन। ओके, सन इज नॉट सेटिंग, सन इज नॉट सेटिंग एट एनी कॉस्ट, सन यहीं पे है, हॉरिजॉन से ऊपर आ गया, बस ऐसा ही सन है हमारा। ओके, ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव 24 आवर्स ऑफ डे लाइट एट दी पोल्स। सो पोल्स पे अगर आप जाएंगे तो आपको 24 घंटे का डे लाइट जो है वो इस तरीके से मिलता है। सी, सन हैज नॉट सेट, सन डूबा नहीं है, सन होरिजॉन से ठीक थोड़ा सा ऊपर है, इट इज जस्ट पीकिंग, तो डिफ्यूज सनलाइट है। ओके, एकदम इक्वेटर जैसा, ट्रॉपिक्स जैसा सनलाइट नहीं है। दिस इज हाउ यू हैव 24 आवर्स सनलाइट एट दी पोलर लोकेशंस। ओके, okay. Is everyone comfortable? Shall I move ahead? Please tell me, do I have your permission? Is the concept now clear? कि 24 आवर्स सनलाइट यानी कैसा रहेगा? सन ऊपर नहीं आएगा, सन होरिजॉन से ऊपर थोड़ा सा रहेगा एंड सन ऐसा कैसा कांस्टेंट रहेगा। ओके, चलो। ओके, सो नाउ यू हैव गॉटन द आइडिया कि 24 आवर्स डेलाइट एंड 24 आवर्स सनलाइट क्या है। नाउ प्लीज सी दिस टू लोकेशंस। Okay. Now please see these two locations, position number C and position number D. Okay, ये दो locations अभी आप देखिए। Okay.
सो इफ यू आर सीइंग दिस टू लोकेशंस, इरफान सर रोटेशन ऑफ अर्थ पोल्स पे क्या इम्पैक्ट करेगा? वो खाली विंड्स पे इम्पैक्ट करेगा। वो विंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। पोलर पोल्स पे आपको पोलर वोर्टेक्स मिलता है। सो वो जब हम लोग विंड्स पढ़ेंगे अभी 2-3 दिनों में, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? सो नाउ प्लीज सी द पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिगार्ड्स टू द सन। ओके, okay, at position number C and D. So if you see position number C and D, okay, each half of the earth is equally exposed to the sun, है कि नहीं? अगर आप पोजीशन C and D देख रहे हैं, so what is happening at position C and D? Okay, each half of earth, okay, each half of earth, okay, is equally exposed, is equally exposed. Am I right? Please tell me. Am I right? अगर मैं पोजीशन सी एंड डी कंसिडर कर रहा हूं, तो ईच हाफ ऑफ द अर्थ इज इक्वली एक्सपोज टू द सन। इतना समझा सभी को? कैन आई मूव यूर, कैन आई मूव अहेड? ओके, या। सो नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ईच हाफ, यानी क्या धरती पे आपको परफेक्टली क्या मिलेगा? इफ आई कंसिडर दिस टू पोजिशंस, सो ऑन दीज टू पोजिशंस you will have perfect 12 hours day and 12 hours night. Hence, position number C and position number D, they are called as what? They are called as equinoxes. उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? Equinoxes कहते हैं। क्यों? क्यों हम लोग इन्हें equinox कहते हैं? Because on these days you have perfect 12 hours day and 12 hours night on earth across latitude. Across latitude आपको basically you will have 12 hours day and 12 hours night. क्यों? Because each half of the earth is equally exposed to the sun. So position number D, this is called as autumnal equinox. Okay, so autumnal equinox normally happens on 23rd of September. 23rd of September को normally आपको autumnal equinox मिलता है। And position number C, it is called as vernal equinox. It is called as vernal equinox. So vernal equinox जो है ये normally आपको 20th March को मिलता है। So vernal equinox normally you find on 28th of March. So 20th of March and 23rd of September, ये ऐसे 2 दिन रहेंगे जब आपको धरती पे बेसिकली हर जगह पे, इवन इफ आई टेक यू टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो आपको 12 घंटे का दिन एंड 12 घंटे की क्या मिलेगी? रात मिलेगी। अभी कंफ्यूज मत होना, हाँ, मैं पोल पे बोल रहा हूँ दिन। पोल पे दिन यानी क्या? सन फिर से ऐसा आएगा एंड सेट हो जाएगा। सन ऊपर नहीं आएगा कभी भी, बिकॉज पोल्स तक पहुंचते पहुंचते सनलाइट कैसा हो जाता है? डिफ्यूज। ओरिएंटेशन देखिएगा पोल्स विद रिगार्ड्स टू सन। सो बिकॉज ऑफ अर्थ एक्सियल टिल्ट हमें पोल्स पे डिफ्यूज सनलाइट मिलता है ना। ये तो हो गया बेसिकली बच्चों का खेल का आंसर। सो नाउ let us go into the optional level and understand what do you mean by equinoxes. So 23rd of September will mark the first day. 23rd of September will mark the first day when you will have sunrise on the southern pole. मैं फिर से बोल रहा हूं, साउदर्न पोल पे आपका पहला सनराइज होगा ऑन 23rd of September आफ्टर 6 लॉन्ग मंथ्स। सो 20 मार्च को यहाँ पे आखिरी सनसेट हुआ सदर्न पोल पे, बिकॉज आफ्टर दैट सदर्न पोल इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन। सो 20th of March basically you had the last sunset, on the southern pole, and यहाँ पे 23rd of September पे पहला सनराइज हुआ on the southern pole after 6 long months. So 23rd of September will mark the first day when the penguins of Antarctica will see the sun after 6 long months. सोचिए 6 महीना आपको सूरज देवता का दर्शन नहीं है। You cannot see the primary source of energy on earth. So जो penguins है हमारे, जो भी वहां पे एंटार्क्टिका में लाइफ है, वो कितनी डिफिकल्ट है। आप तो बढ़िया ट्रॉपिकल एरियाज में हो, मॉनसून एंजॉय कर रहे हो, बट पेंगुइन्स का सोचिए
3 महीने तक पेंगुइन्स एक ही पोजीशन में फिक्स्ड खड़ी रहती है। 3 मंथ्स दे बेसिकली सर्कल देमसेल्व्स एंड अपने बच्चों को, अपने अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक पोजीशन से हिलती नहीं है 3 मंथ्स तक। इसका एक रीजन है बिकॉज ऑफ दिस, अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है, बिकॉज ऑफ दिस यू हैव 6 मंथ्स ऑफ डार्कनेस। सो सन है ही नहीं, टेम्परेचर ड्रॉप डाउन, एंड सेकंड रीजन इज पोलर वोर्टेक्स। मैं जब आपको बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी की डिटेल्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपके साथ पोलर वोर्टेक्स भी डिस्कस करूंगा। ओके, सो पोलर वोर्टेक्स इज बेसिकली कि पोल्स पे हवा जो है वो खाली घूमती रहती है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस दैट the equinoxes will mark the day of either first sunrise or first sunset at the polar locations, एंड इसका ठीक उल्टा होगा नदर्न पोल पे। सो 23rd of September will mark the last sunset on the northern pole. नॉर्थ पोल फिर इसके बाद जो है वो डार्कनेस में जाएगा, फिर यहाँ पे आपको सन दिखेगा ही नहीं। ओके, सो नॉर्थ पोल जो है, ओके, यू विल हैव द लास्ट सनसेट एंड देन नॉर्थ पोल विल एंटर इनटू परपेचुअल डार्कनेस आफ्टर दिस, एंड नॉर्थ पोल पे पहला सनराइज होगा फिर आपका कब, ऑन 20th of March आफ्टर 6 long months. सो 6 महीने तक फिर से नॉर्थ पोल विल एंटर इनटू द डार्कनेस। नॉर्थ पोल मीन्स 90 डिग्री नॉर्थ बोल रहा हूं मैं, हाँ, मैं उसके नीचे के लैटिट्यूड्स नहीं। नीचे की लैटिट्यूड्स में दिन धीरे 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 दिन की फ्रीक्वेंसी, सॉरी, दिन की जो लेंथ है वो कम होगी एंड रात की लेंथ धीरे 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 बढ़ती जाएगी। इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस? प्लीज टेल मी, do you understand the tropics? Do you understand the polar latitudes? Do you understand the equinoxes? Do you understand the solstice? समझा सभी को? समझा सभी को? Please tell me. Okay, so I will end my lecture by a very good afterthought. Okay, जो आपको बेसिकली दिन भर प्रोवोक करेगा ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। So जो हमारा खाना लिंक है, अच्छा इक्विनॉक्स बता दो। ओके, इक्विनॉक्स जो है, कौन पूछ रहा है? ओके, सुकांता। सो सुकांता, बेसिकली इक्विनॉक्स, बेसिकली अगर आप ये दो पोजीशंस देखेंगे तो यहाँ पे धरती के दोनों हाफ जो है वो सन को इक्वली पॉइंट कर रहे हैं बेटा। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, धरती पे आपको परफेक्टली 12 घंटे का दिन एंड 12 घंटे की रात मिलेगी, एंड दे आर डिनोटेड बाय 23rd of September, इट इज कॉल्ड एज ऑटोमोनल इक्विनॉक्स, एंड 20th of March इट इज कॉल्ड एज वर्नल इक्विनॉक्स। सो जो 23rd of September है, ये पहला सनराइज डिनोट करेगा कहां पे? सदर्न पोल पे, बिकॉज इसके बाद जो सदर्न पोल है ये जा रहा है समर्स में, एंड दिस विल बी द लास्ट सनसेट ऑन वेयर? नदर्न पोल। इसके बाद नॉर्थ पोल जाएगा आपका 24 आवर्स डार्कनेस में, एंड जो 28th of March है वो बेसिकली पहला सनराइज रहेगा नॉर्थ पोल पे आफ्टर 6 long months of winters, and southern pole will experience its last sunset before going into 6 long months of darkness. Got it, Sukanta? Okay. So guys, every year we celebrate Uttanarayan, we celebrate Makar Sankrant, we celebrate Lohri. याद है सबको? हम लोग लोहरी, पोंगल, साउथ इंडिया वाले पोंगल सेलिब्रेट करते हैं। ओके, यू हैव उत्तरायण इन द नॉर्थ, यू हैव मकर संक्रांत इन सेंट्रल इंडिया, एंड यू हैव लोहरी इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। करते हैं कि नहीं? यस, ओडिशा वाले बिहू सेलिब्रेट करेंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? सो ये क्या है बेसिकली? व्हाट आर दिस फेस्टिवल्स? ये फेस्टिवल क्या डिनोट करता है? ये फेस्टिवल क्या डिनोट करता है? ओके, आपका रमजान होता है। रमजान में आप बेसिकली जो लास्ट डे रहता है रमजान का, ईद जब होती है, वो क्या डिनोट करती है? वो ये डिनोट करती है कि बेसिकली नाउ द सन हैज माइग्रेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी सन आ गया है हमारे नॉर्थ में, सो इसके बाद आपको सनलाइट के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। एंड आप देखिएगा जैसे ही सन आता है, सो जैसे ही हम लोग विंटर से बाद समर सन आने लगता है, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम कर पाएगी प्रॉपरली? बिकॉज अभी आपकी डे लेंथ धीरे 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 बढ़ती जाएगी। सो हमारी बॉडी जो है वो चेंज ऑफ सीजन्स को एक्लिमेटाइज नहीं कर सकती है। हमारी बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस पर रहना पसंद करती है, वो ज्यादा इधर उधर भटकना पसंद नहीं करती। इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, okay, every festival in India, okay, every festival, be it any religion, देखना आपके फेस्टिवल में आप लोग
तिल मीन्स सेसमी सीड्स, है ना, सेसमी सीड्स ज्यादा खाओगे आप। बेसिकली अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो नॉर्थ इंडिया में आप सरसों खाना पसंद करेंगे। अगर आप साउथ इंडिया में है तो साउथ इंडिया में चटनी बनाना पसंद करते हैं जैक फ्रूट की। ओके, रसम अलग बनता है साउथ इंडिया में। सो ये सारी चीजें क्यों है? बिकॉज अगर आप स्पाइसेस डालेंगे, अगर आप रसम डालेंगे, इफ यू पुट इन सेसमी सीड्स, इफ यू पुट इन सरसों का साग, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, अच्छी तरीके से काम करने लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। सो आपका जो खाना लिंक्ड है, जो आपके फेस्टिवल लिंक्ड है, वो सारे किससे लिंक्ड है? ज्योग्राफी से। Hence, geography is the mother of all subjects. Mother in the sense, like not like I'm talking like इससे सारे subjects आए, but geography इन सब के ऊपर है। Because in geography we are basically understanding कि हमारा सन के साथ, हमारा यूनिवर्स के साथ क्या रिलेशन है। तो एक बहुत आफ्टर थॉट आपको छोड़ रहा हूं मैं कि आप जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे वो किससे लिंक्ड है? द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। एंड उससे आपका खाना भी लिंक्ड है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, बिकॉज कल की क्लास में मैं आपके साथ डेजर्ट्स क्यों बनते हैं धरती पे वो बताऊंगा। सो नो वन विल मिस टुमारोज क्लास। ओके, सो गाइज आई टेक योर नोट फॉर टुडे। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग। आर यू ऑल एंजॉयिंग द क्लासेस कि बोर हो रहा है आपको? ओके, आर यू एंजॉयिंग मी? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपको मैं पसंद आ रहा हूँ या नहीं। ओके, लेट्स सी वेयर थिंग गोज। ओके, या दे आर ऑल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। या ठीक है, सो आपको मेरा पसंद आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्योग्राफी तो आ ही जाएगी पसंद, वो तो है ही खूबसूरत डिसिप्लिन है ज्योग्राफी। ओके, चलो, ओके ओके ओके, थैंक यू इशिता। ओके, सो thank you, Irfan Saab. Okay. No question today. No, Garima. No question today. Okay. Okay. Thank you, Pooja. Okay. I am finding many doctors in this batch. You are all PhD candidates, guys. आप कहाँ मुझसे पढ़ने आ गए? ठीक है, चलो। सो आपके आगे तो मैं बहुत फिर अभी छोटा इंसान हूँ, ठीक है। इफ यू आर डॉक्टर्स, इफ यू आर PhDs, ओके, सो प्लीज ट्रीट मी लाइक आई एम नॉट दी बेसिकली गैदरर। आई एम बेसिकली अ गैदरर ऑफ नॉलेज। आप मुझे जो टॉपिक बोलेंगे मैं उसमें बोल सकता हूँ। ओके, सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, इंजीनियर्स आई एम आल्सो एन इंजीनियर। सो कैन यू सजेस्ट एनी रेफरेंस बुक? राहुल, टाइम आने दीजिए, टाइम आने दीजिए, फिर आप बोलेंगे कि सर इतने किताबें पढ़नी है क्या? ठीक है, सो लेट टाइम कम। धीरे 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 बकरे को हम लोग हलाल करेंगे। एकदम से हलाल थोड़ी कर दिया जाता है बकरे को, धीरे धीरे हलाल किया जाता है। सो आपकी प्रोसेस वो ऑन हो चुकी है, ठीक है, तो धीरे धीरे आप कटोगे, ठीक है। चलो, सो सी यू ऑल टुमारो गाइस शार्प एट 11 AM, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स। ओके ओके, चलो, सो सी यू ऑल टुमारो शार्प एट 11। ओके, या क्विकली आस्क क्वेश्चन, किसको कुछ पूछना है जल्दी पूछिए। ओके, क्विकली आस्क बिकॉज आई हैव अदर शेड्यूल्स। जल्दी पूछिए। राहुल सर, क्विकली आस्क मी, आई एम वेटिंग। Rahul sir, please quickly ask me the question. Will geography optional cover environment and disaster management? Of course, Gaurav. Of course करेंगे. Okay. कब से 1 बजे से क्लास लेंगे? राहुल, like when I feel that like I can now start official climatology with you तब. So I guess 5-6 classes more हमें लगेंगे। उसके बाद मैं आपको 1 बजे शिफ्ट कर दूंगा। जब तक कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं आपको ऑप्शनल का वो कोचिंग ऑन कर सकता हूँ, तब तक हम लोग ऐसा रखेंगे, फिर 1 बजे शुरू करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, चलो, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई होप कि आप इसे माइंड नहीं कर रहे हो ना, ओरिएंटेशन सेशंस को प्लीज माइंड मत कीजिए। इफ यू वांट दैट आई शुड डायरेक्टली स्टार्ट क्लाइमेटोलॉजी, आप वैसा बोल दीजिए, फिर आपको 3-4 दिन का हॉलीडेज देके वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट क्लाइमेटोलॉजी। इट्स अप टू यू। ओके 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 राहुल, जीएस की क्लास है, ठीक है, बट ये ऐसे टॉपिक्स है कि जो आप बेसिकली मैं आपको लिखने के लिए पूछने बोला, जो समझना है। ओके,
Okay, so if you want that I should skip orientation sessions and directly वो करूँ तो even I can do that, it's up to you. But मुझे लगता है कि आपको इस तरीके से लूंगा तो थोड़ा फायदा रहेगा आपको. Okay, so it's up to you. Okay, okay, let's carry forward. कोई दिक्कत है तो हम लोग कर सकते हैं manage. Okay, okay, we will do that. ठीक है, चलो. So see you all tomorrow sharp at 11 a.m. Okay, okay Rahul, no worries then. Have a good day everyone. Yeah. Don't kana no, I'm not giving any question today. ठीक है. Yeah, please join the study optional IQ geography optional group and please do the Hindu analysis daily. ठीक है, मैं उसकी भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा कि हिंदू कैसे पढ़ना है, वो भी हम लोग करेंगे. ओके, थैंक यू.